अगर कोई एक से दो लोग कंफर्म कर दें तो वी आर गुड टू स्टार्ट। सर आपकी स्लाइड विजिबल है? मैं अभी फिलहाल इनके माइक्स म्यूट है, मैं इनके माइक्स भी अनम्यूट कर देता हूँ एंड आई विल इंट्रोड्यूस यू एज वेल। जी माइक सबके अनम्यूट करें। Okay, participants, it's time to start our first session, and our resource person for this session, Dr. Shahid Imran, is here with us, and he is currently working as a chairman and professor at Mechanical Engineering Department, University of Engineering and Technology, Lahore. And today he will talk about problem solving and decision making skills. Over to you, sir. You can start the session, and I'm going to allow mics for the attendees as well. Yes. Thank you so very much for unmuting the mics of all the friends who are on the other side of this training program. चलिए जी, ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो करा दिया गया है। थोड़ा सा मैं अपनी टीम का भी इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। इनमें से कुछ लोगों के साथ यू मे हैव ऑलरेडी वर्कड विद और द अदर्स दे मे कम इन। दिस इज मी माई सेल्फ। मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट काम कर रहा हूँ इन द यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। I'm a PhD from University of London, UK, and a Fulbright Fellow from St. Louis University, St. Louis, Missouri, USA. तो ये जो मोस्टली जो काम जो है मेरा दैट इज़ ऑन कल्चर चेंज मैनेजमेंट और जो ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क डेवलपमेंट, ये सॉफ्ट स्किल्स के इनके ऊपर। Then we have Dr. Fahad Noor. He is also a professor at the University of Engineering and Technology. The other individual who is engaged today is Dr. Muhammad Amjad, who is going to conduct the second session today. And then we have Professor Dr. Muhammad Asif Rafiq. He usually talks and train on the research related skills. So is Dr. Hassan, and you may have also worked with Dr. Amjad Hussain, who is former director of continuing engineering education, and he usually conducts session on the team building skills. So these are some of the recent contributions that myself and my team has made over past few months, maybe now it's more than a year now, using the PHEC platform, Pakistan Engineering Council's platform. We have worked with almost every public sector university that lies in the geographical boundaries of the province of Punjab, and all public sector colleges regarding the capacity building of the principals and the vice principals, and then the promotion related trainings of the associate professors, both ladies as well as gentlemen, and now this training we are dealing with. So these are some of the institutes that we have recently worked with. This session hai, this is pretty long session actually. Usually these are 6 sessions when we conduct this training with our private sector clients or colleagues. So ये problem solving is a full day job. So 3 sessions, and then the decision making, they are another 3 sessions. So what we would like कि ये जो आपका आज का दिन है, ये जो session number 1 है especially, एक brief सा at least image हम present करें कि when we are solving problems, जो प्रॉब्लम के सोल्यूशन के ऊपर कितना जोर होना चाहिए, प्रॉब्लम की डेफिनेशन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, एंड व्हाट इज द हायरार्की ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड द सोल्यूशन, एज द आइंस्टाइन सेड, व्हेनेवर साइंस सॉल्व्स ए प्रॉब्लम इट क्रिएट्स मैनी. सो इट मींस समटाइम्स देयर आर सॉल्यूशंस दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम. इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि when we are work in Lahore, for example, in October, November, there is a 5th season added. उसे कहते हैं ये smog का session है. Smog, it's just like a gas container है जैसे इसमें आप बंद हो गए तो you can't actually breathe freely. तो अब sometime ये सवाल होता है कि ऐसा क्यों है. तो इसमें फिर ये जो problem solving जो है that has a direct bearing on that particular issue. ये किसी न किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जो ये प्रॉब्लम हम स्मॉग का देख रहे हैं. जिस थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देन वी वुड आई वुड इलस्ट्रेट दिस एग्जांपल. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग एज अ प्रोसेस, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि व्हाई इज इट अनवाइज टू रीइन्वेंट द व्हील. हमारा मसला ये है, मैनी टाइम्स वी फाइंड के वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. So, but there are solutions, there are, working bits. What we have to do is
we need to put these bits together. इसमें कुछ examples हैं जो historically different companies, different organizations, they have taken without reinventing anything. तो अगर आप हर दफा पहिया इजाद करेंगे तो you need कोई 50,000 or million years to come to this point. So what precedes all actions? What determines what actions we take? What is the father of action? Now, when we are making decisions, this is critical. So then we need to ask a few questions that do we experience emotions of tragedy and frustrations in the moment of making decisions? Now you are going to be associate professor, hopefully all of you very soon. You will be getting more and more administrative positions, heads of the departments, vice principals and the principals and all other things. So we need to see कि ये जो decision making का है या जब आपने कोई goal achieve करना है, you have set an aim or an objective, तो उसको achieve करने के लिए how do we proceed actually? So just do it. Why can't we everyone follow it? कर गुजरे, but not everyone can follow that. We are unaware that what does it mean to make a real decision and what is the force that a concrete or committed decision create. Are we interested in making good decisions? If yes, then you should not be afraid of making decisions. We should make a lot of them. We will discuss about this as well. Then, did we ever decide? And if we had made a decision, did action flow from it? अगर वो फैसला आपने कर लिया है, तो that is simply a piece of paper if there is no action initiated out of that decision. When we are making a decision, ये जो bigger hierarchy है या framework level पे या strategic level के ऊपर what we need to see, there are a few questions we need to ask. That what is our purpose? What are our fundamental values? What are our goals? What are the key advantages? And how should we exploit them? How should we be organized and structured? What resources are required if you are in the process of making a decision? तो उस decision में any action items that are listed or any outcome that you have defined that you want to achieve them. In order to achieve those outcomes, what resources are required? How shall we know that we have achieved our aim? कि अगर आपने कोई destination define की है, तो what are the KPIs, key performance indicators क्या हैं, which can actually help you or guide you? कि now you have reached your milestone. And how do we manage uncertainty, friction, and risk? We all know that these are there is no way that we can predict what is going to happen. So there is a certain level of uncertainty. एक uncertainty level जो है वो exist करता है. So when you are considering things, for example, well, not last year, before last year, in 2019, at this point of time in the year, any COVID-19 is going to disrupt the global business. And it is going to be a massive disruption, and we will all be locked in our homes, and we will be actually, in order to continue this teaching learning process, नए tools सीखना पड़ेंगे और trainings होंगी. So there was nothing that we could have predicted. So ये uncertainty को कैसे manage करना है? फिर friction, yes, wherever there are humans interacting with each other, this is very natural. So as a decision maker, you need to have a very good look on this issue कि ये जो friction जो है इसके कुछ फायदे हैं, कुछ इसके नुकसानात हैं. How we are going to optimize the friction that is present within the team members or within the organization that you are leading. और रिस्क जो है उसको कैसे मैनेज करना है, रिस्क जो है उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, फिर रिस्क को क्वांटिफाई कैसा किया जाएगा, उसका क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस आप कैसे करेंगे, रिस्क का रिस्पांस कैसे प्रिपेयर होगा, फिर आप उस रिस्पांस को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे. सो दीज आर ऑल द थिंग्स व्हिच एज अ डिसीजन मेकर यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये एक मेरा ख्याल ये है कि आप में से जो लोग थोड़े बहुत टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं, स्पेशली म्यूजिक को अगर आप लाइक करते हैं, तो ये आईपॉड जो है ये एप्पल एक कंपनी है, उसके कंप्यूटर आप यूज करते हैं, इट्स फेमस कंपनी, वी ऑल नो दैट. सो इन्होंने एक बहुत ही डिसरप्टिंग इनोवेशन ये 2001-2 अर्ली दिस सेंचुरी ये लेके आए. तो ये जो म्यूजिक का एक आइडिया था, ये पोर्टेबल म्यूजिक. अब ये पोर्टेबल
काइंडली अपने माइक्स जो है ना ये खुले इसलिए हैं ताकि आपको ना फ्रीडम फील हो। तो लेकिन वो इफ यू थिंक कि ये पीछे बैकग्राउंड नॉइज है तो काइंडली आप खुद भी इसको म्यूट कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि व्हेन द एप्पल दे वर थिंकिंग अबाउट दिस न्यू इनोवेशन, they were what they were trying to do, were they trying to make a product or were they trying to solve a problem? तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है इसके बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं, एक प्रॉब्लम वाली साइड है एंड देयर इज अनदर साइड वी कॉल द सॉल्यूशन साइड, द प्रोडक्ट साइड। many a time we are very much obsessed with the solution and we ignore the problem. So having not defined the problem in a right context, जो भी आप solution लेके आएंगे, that solution is very unlikely to work. So our question ये है कि did Apple do anything from the scratch? No, Apple didn't do anything from the scratch. Portable music का जो idea है that existed before iPod, Walkman जिसके साथ हम बड़े हुए हैं, सोनी का Walkman जिसके अंदर वो कैसेट चलती थी जिससे वो रील्स होती थी, that was a portable music. तो आप वो आपने अपनी पेन के साथ जो है उसको लटकाया हुआ है या हाथ में पकड़ा हुआ है और वो जो एयर जो with your headphones on, तो इसका आइडिया वाज नॉट दैट न्यू, लेकिन इसके बावजूद द प्रोडक्ट दैट दे ब्रॉट इन दैट वाज ग्राउंड ब्रेकिंग. व्हाई? दिस इज द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द आंसर इज ना तो प्रोडक्ट नया था ना आइडिया नया था, जो टेक्नोलॉजी है ये भी बेसिकली पहले एग्जिस्ट करती थी. अब सवाल ये है कि व्हाट वाज सो गुड अबाउट कि इसके इतनी ज्यादा जो iPod व्हेन इट वाज लॉन्च्ड इट वाज सोल्ड लाइक अ हॉट केक, बहुत ज्यादा ये सेल हुआ. तो रीजन कि ना उन्होंने कुछ स्क्रैच से किया, ना टेक्नोलॉजी इन्वेंट की, ना ही ये आइडिया नया था. व्हाट डिड दे डू? दे एक्चुअली सॉल्व्ड ए प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या थी? जो इस वक्त यानी कि उस वक्त जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशन था दैट वाज सोनीज वॉकमैन, उसके लिमिटेशंस थे. इफ यू आर गोइंग आउट तो आप 5, 6, 7 कैसेट जो हैं वो साथ लेके जा सकते हैं और 5, 6 कैसेट में कोई रफली 100 के लगभग जो सॉन्ग्स जो हैं दे कुड हैव बीन स्टोर्ड. What did they do? It was a problem. If you are going on say 1 week holiday, so that will not actually work. Then Apple ने क्या किया फिर? ये आपको जो नजर आ रहा है ना, this is what Apple did. Apple ने इस आइडिया को यूज किया. टेक्नोलॉजी someone else was using that technology. Apple ने जो बिजनेस मॉडल जो है उन्होंने कहा कि when Sony sells the Walkman, तो लोग Walkman सोनी का खरीदते हैं, कैसेट तो किसी भी से भी खरीद सकते हैं. तो what did they do? Apple ने बिजनेस मॉडल नहीं कॉपी किया, बिजनेस मॉडल उन्होंने कॉपी किया जिलेट का. अब जिलेट में आप देखिए what we do, we go and buy the handle. ये जो हैंडल जो है अगर आपने जिलेट का हैंडल परचेज कर लिया है तो there is no way you can buy the razor of a different company. So now what happens? जो when they brought this particular product in, तो उससे क्या हुआ कि सोनी के वॉकमैन में किसी की कैसेट भी चल सकती है, बट व्हेन यू बाय दिस iPod में iTunes जो हैं ये सिर्फ एप्पल ही की चलेंगी. सो दे सॉल्व 2 प्रॉब्लम्स. नंबर 1, दे सॉल्व के जो लिमिटेशन का मसला हल किया उन्होंने कि जो नॉर्मल वॉकमैन था दैट यूज्ड टू स्टोर अराउंड से 100 सॉन्ग्स इन 6 कैसेट्स, लेकिन 1000 सॉन्ग्स इन iPod. So this is something that got solved. एक और प्रॉब्लम थी कि जो म्यूजिक का जो डाउनलोड था, इलीगल डाउनलोडिंग ऑफ द म्यूजिक, दैट वाज बिकमिंग अ बिग प्रॉब्लम इन द यूएस मार्केट. तो एप्पल ने उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया. सो एक ही प्रोडक्ट के साथ विदाउट इन्वेंटिंग एनीथिंग, ये टेक्नोलॉजी जो है ना, ये वाली हार्ड ड्राइव बेस्ड टेक्नोलॉजी, ये सिंगापुर की एक कंपनी है उसने इन्वेंट की. जो वॉकमैन है ये सोनी ने इन्वेंट किया. व्हाट एप्पल डिड? एप्पल ने उन दोनों को मिक्स किया.
और बिजनेस मॉडल जो है ना सिंगापुर वाली कंपनी का यूज किया ना सोनी का यूज किया, बिजनेस मॉडल जो है एक रिमोट प्रोडक्ट जो है उसका यूज किया। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन म्यूजिक डिवाइस एंड अ जिलेट रेजर। तो इसके बारे में कहा जाता है कि व्हेन वी कॉपी समवन विद इन आवर ओन फील्ड, हमें कहा जाता है कि ये पायरेसी है, ये प्लेजरिज्म है। व्हेन यू कॉपी फ्रॉम अ वेरी रिमोट फील्ड देन यू आर कॉल्ड एक्चुअली जीनियस। कॉपिंग इज समथिंग दैट शुड बी इम्प्रूव्ड। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप आइडियाज को कॉपी नहीं करेंगे तो एवरी टाइम यू आर गोइंग टू री इन्वेंट द व्हील। उस पे अभी हम देखते हैं कि री इन्वेंशन ऑफ द व्हील जो कितना बड़ा मसला है। When we are in the process of putting up a solution to a problem, तो ये बेसिकली 6 steps हैं जो हमें याद करने की जरूरत है। If you are trying to solve a problem, if you are trying to put up a solution together, so this is what we need to do is step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 and step 6. So I'll not cover all the steps today. I'll only talk about the defining and borrowing stuff because we have to cover the decision making part as well. So now if you have to create a solution, तो आप स्टार्ट अवे या स्टेट अवे जो है सोल्यूशन की तरफ जाने के बजाय लुक इनटू द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को अगर आपने ठीक तरह से डायग्नोज नहीं किया तो यू विल क्रिएट ए प्रोडक्ट दैट नो वन वांट्स। वो जो सोल्यूशन जो है वो कोई भी नहीं खरीदेगा। यूजुअली आजकल जो ट्रेनिंग में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि दिस इज वी आर एट द इंटरफेस ऑफ विंटर एंड समर। समर इज ऑलमोस्ट पास्ट। 2-3-4 हफ्ते बाद जो है ना एयर कंडीशनर जो है दे आर गोइंग टू बी आउट ऑफ फैशन। तो आप देखिए कि आजकल अगर आपको कोई आके जो वूल जो है या जर्सी या जैकेट बेचने की कोशिश करे, विल यू बाय दैट जैकेट? नॉट मैनी ऑफ अस विल बाय दैट जैकेट। जैकेट हम अगस्त में या सितंबर अर्ली क्यों नहीं खरीदते? उसकी वजह यह है कि दैट जैकेट डज नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है कि द क्लॉथ्स दैट वी यूज उसका एक पर्पस है कि वो बेसिकली एक तो क्लॉथिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो है। दूसरा ये जो वेदर रिलेटेड जो इफेक्ट्स जो हैं, ये इम्पैक्ट है कि अगर गर्मी है तो उसके और तरह के कपड़े हैं, सर्दी है तो उसके और तरह के कपड़े हैं। अब कपड़े कर क्या रहे हैं? दे आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। इफ वी हैव नॉट डिफाइंड द प्रॉब्लम राइट, तो इसका मतलब ये है कि द प्रोडक्ट दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट और द सोल्यूशन that we are going to create, that solution is very unlikely to work. So the first step कि problem को define करेंगे, इसमें थोड़ी सी और भी बात होगी। Once you have defined the problem, अब अगला step जो है वो है solution। तो question ये है कि shall you try to not look into anything, और बिल्कुल कहें जी कि मैं एक genuine जो solution है right from the scratch वो create करूंगा। Well, that is not an appreciated approach. Once you have defined the problem, अब आपने देखना यह है कि ये प्रॉब्लम करंटली कैसे सॉल्व हो रहा है, who are solving this problem currently and how they are solving this problem currently, and what are the problems with the existing solutions. And if you can find the problem with the existing solution, you can borrow all the good ideas that lies with the existing solution, उन्हीं का mix and match करें, and then on top of it you can put your own idea together and it will become a solution. So ये 3 steps जो हैं, defining, borrowing and combining. You define the problem, then you see how others are trying to solve the problem and क्या उनसे solve हो भी रही है कि नहीं हो रही, and then what are the problems with the existing solutions. Once you have seen the problems with the existing solutions, you can borrow all the good parts from the existing solutions and put them together, make an optimum combination, combine them so a semi solution is ready. Then you need to
ट्रांसफॉर्म, फिर आगे इनक्यूबेट करें, इनक्यूबेट, जजिंग एंड एनहांसिंग। ये बेसिकली द फर्स्ट 3 स्टेप्स जो हैं इन्हें हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ क्रिएटिव आइडियाज। दिस इज हाउ क्रिएटिव आइडियाज आर जनरेटेड। ये जो क्रिएटिव आइडियाज जो हैं, इट्स नॉट के ऑल द टाइम, नॉट इवन दोज जो अगर हम साइंटिफिक हिस्ट्री में जो बड़े बड़े जो नाम है उसको अगर हम देखें तो nobody started from the scratch. People had solutions. They were good to spot the problems with the solution. आप न्यूटन के एग्जांपल ले लें, डार्विन के एग्जांपल लें, आइंस्टाइन के एग्जांपल लें, none of them actually reinvented the wheel. तो उन्होंने बेसिकली जो एवोल्यूशन किया है, एवोल्यूशन यही है कि wherever the buck stops, you उसको वहां से पकड़ें और आगे उसको मूव करें। So the first 3 steps जो हैं, they are the origin of creative ideas. Whenever you are solving problem, you have to be creative. And where do the creative ideas come from? The creative ideas come from by defining the problem, by borrowing the good things from the existing solutions and then putting them together. This is where the creative ideas are born. अब उन्होंने evolve होना है, तो the solution will be incubated, then your own solution will be judged. तो judgment जो है उसको हम अप्लाई करेंगे, डिसीजन मेकिंग के जो टूल्स को उनको यूज करेंगे, एंड देन वी विल जो छठा स्टेप है दैट इन्वॉल्व्स रीडिफाइनिंग, रीबॉर्विंग, रिकम्बाइनिंग, रीइनक्यूबेटिंग एंड रीजजिंग। दिस इज हाउ ये जो सारा प्रोसेस है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, दैट शुड एक्चुअली वर्क। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे कहेंगे द सोल्यूशन जो है वो एक जेन्युइन सोल्यूशन है। तो genuine solution requires creativity, it requires lateral thinking, and it requires putting it all together. सारे जो pieces हैं, it is the last piece that matters. आपने एक whole create करना है। The parts are existing. आप कोई भी problem उठा लें, when you are trying to solve a problem, you are not the first one. ये it is very highly unlikely कि कोई ऐसा प्रॉब्लम आए आपके पास सामने कि जिसका कोई भी प्री रैक एग्जिस्ट नहीं करता। तो in some form pieces are there. What you have to do is you have to recognize the pattern in the existing data, in the existing problem. You need to create a hierarchy of the problems and this. तो वो क्या है, वो मैंने जो पहले थोड़ी सी एग्जांपल दी, जो स्मॉग है इज अ प्रॉब्लम। स्मॉग इज अ बिग प्रॉब्लम इन लाहौर और लाहौर के जो गिरदो नवाह के एरियाज हैं। इन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यू कैन नॉट एक्चुअली हैव अ डीप ब्रेथ। आप गहरा सांस नहीं ले सकते बिकॉज योर लंग्स दे आर एट रिस्क कि इतनी ज्यादा पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है। और वो अगर आप गूगल में देखें तो आ रहा होता है एटमॉस्फेयर की डिस्क्रिप्शन आ रही है स्मॉग। तो अब ये क्या है? This is the result of the solution. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप 50 इयर्स पीछे चले जाएं या से 60-70 इयर्स, बिल्कुल इसी प्लेस के ऊपर people they had excellent air to breathe in, they had excellent water to drink. तो क्या था? Yes, they used to travel on horses and donkeys and carts. तो अब क्या हुआ? हमने कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन एक प्रॉब्लम था। The communication or transportation, it was slow. ये बात सही है। अगर अपने घोड़े से अगर आपने गुजरांवाला से लाहौर आना है तो well it take a day, maybe a day and a half. अगर आप एक दिन में आते थे तो अब you can come in like in half an hour or an hour and a half time. So what we have done, we have quickened the communication. We have solved the transportation problem and we have created the health problem, which is actually a life problem. So this is the biggest dilemma of this problem solving skill जिसके ऊपर अभी आज हम बातचीत कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि if we have not defined the problem right, हम प्रॉब्लम जो है उसकी जो प्लेस है इन द हायरार्की ऑफ द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, वी कैन नॉट फिक्स द स्पेस ऑफ द प्रॉब्लम, वी डोंट नो वेयर द प्रॉब्लम लाइज। इफ दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, व्हाट न्यू प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी क्रिएटेड? व्हेन यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम,
and your solution creates higher order problems, those solutions are not sustainable. This is how we define the sustainability in this hierarchy of the problems and solutions. There is a hierarchy. Hierarchy exists करती है. You solve a problem, there is another problem. If that problem is a lower order problem, that solution is good. But if you solved one problem and created a bigger problem, जिसकी मैं एक example दे रहा हूँ आपको, कि smog is a health problem and hence this is a life problem, life threatening issue है कि there are many deaths. अगर आपको अस्थमा या इस तरह के कोई issues हैं तो if the atmosphere becomes murky और इस तरह का smoggy environment हो जाता है तो people can actually die. So what we have done, we have solved a lower order problem and we have created a higher order problem. The reason is that कि हमारा सारा जो focus है that was on the solution. कि हमने किसी न किसी तरीके से we are going to solve the problem of communication without letting ourselves know. ये हमने नहीं किया. जाहिर है जो हमारे forefathers हैं, जो हमारी prior generations of engineers जो हैं या multiple जो governments जो हैं और जिन्होंने ये सारी legislation की different जो transportation के regarding, they did not look into this problem. So how do you define a creative idea? What makes an idea useful? This is critical. So ये सारे जो अभी आपको लोग नजर आ रहे हैं, मेरा ख्याल है you must be recognizing most of them. This is Bill Gates, Steve Jobs. These are the founders of Google, Sergey and Larry. So then we have Darwin, we have Newton, we have Einstein. None of them actually started from the scratch. None of them were trying to create a solution. All of them, they were trying to solve a problem. Microsoft became a product, became a giant company because they were trying to solve some problems. वो computation के मसाइल थे. They wanted to have a desktop at every desk. Then Apple and then Google was never a company. They were trying to solve the data sorting के problems थे, library science के problems जो हैं Stanford में, they were trying to solve those problems. So when they were solving problems, they were defining problem. So the solution they created, they were very sustainable. This is what happens actually. जो मैंने कह रहा हूँ कि should we try and reinvent the wheel all the time? This is the travel from here to here. कि जो old ancient Neanderthal थे, जो used to live in the caves और आग जलाने के लिए भी they used to use these stones. उनको एक दूसरे के साथ वो abrasion और उस friction से जो fire निकलती है, that was a source to ignite. तो the thing started from there. So this was a Neanderthal who saw a falling rock. उसने देखा कि ये जो पत्थर जो हैं they are falling, it means they can travel. Then they chiseled that rock into wheel. उसने कहा पत्थर की जो shape है that is not round. What should we do? If we have to make a use of it, we need to chisel it. So what they did, when they chiseled it, it became round. उसके जो corner थे उसको उन्होंने subside कर दिया. Now it became an easy rolling equipment. And then they realized कि ये जो stone को chiseling जो है that is quite tough. लेकिन जो tree है वो तो बना बनाया wheel है. आप tree के pieces काटते जाएं and you can create this. So rock was chiseled, then wood replaces the stone. Stone के ऊपर working जो है वो difficult थी, जो tree की shape है वो already round थी, so wood replaced the stone. Then ये जो wheel है that was fitted with the wheelbarrow. So wheelbarrow बन गई. Then there was another wheel added to the wheelbarrow. It became a cart. Then came a horse that made it a chariot. And then there were 2 more wheels added and it became a carriage. 500 or
450 years ago, there was a steam engine invented. The horse was released and the steam engine was fitted in front of the carrot, and then was the early IC, means internal combustion engine car, and now we have this Mercedes Benz. So this is the time travel. This is how innovation work. So अगर आप if you are in the process of solving a problem और आप कहते हैं जी कि I will start from this point, so you will not survive till you reach here. So what is a smart way of solving the problem? इसमें पहले बात हो रही है कि when we are solving a problem, it is critically important that we define the problem well. जो problem की जो definition है, that is critical. And then what are the existing solutions? And what are the problems with the existing solutions? If you can identify the problems with the existing solutions, your own solution is going to be sustainable. So how you define the problem determines how you solve it. This is critical. If you have defined a problem wrongly or in a wrong way, you will go in a different direction. When मैंने जो example दी पहले कि if we were trying to solve the problem of communication or transportation in isolation without understanding the relationship between that one problem, and there are many other problem and solution. There is an ecosystem of problems and solutions. What we need to do is we need to find the place of that problem. How you define the problem determines how you solve it. इसकी एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये आपको दो पिक्चर्स नजर आ रही हैं. ये पिक्चर जो है इट लुक्स लाइक दिस इज एन आइलैंड. ये एक जजीरा है. आइलैंड, इफ यू अंडरस्टैंड दिस, के ये एक वाटर बॉडी है, चारों तरफ वाटर बॉडी है और इसके बीच में एक पीस ऑफ लैंड जो है दैट इज ट्रैप्ड. So what you do, if you want to get to this point, आप चाहते हैं मैं आइलैंड पे जाऊं, तो ये एक प्रॉब्लम है. How to get there? If you treat it as an island, you need to make this. But if you understand that this is not a peninsula or this is not an island, rather this is a peninsula, कि मैं थोड़ा सा अगर वॉक करूंगा तो दूसरी तरफ से इसका लैंड के साथ कनेक्शन भी है, then you don't need to invent this product. This will be a total wastage of time. You need just to walk and you can reach your destination. So what has happened? If you define it as an island, you need this, and if you define it as a peninsula, you don't need any product. You just need to go and walk. So the problem is the foundation on which the ideas are built. So we have got to be problem focused. We need to see what generates that problem. Can we eliminate the problem altogether so that it is not required? इसके आगे एक example भी आएगी. So the problems, they have problems with themselves. The first problem with the problem is that we are, too much obsessed with building solutions, not defining the problem. When we are not defining the problem, we have defined it as an island and we created this. जब ये आपने पूरा लकड़ियां जमा करके, you have created this boat, and when you reach there, तो अब जब वहां पहुंचे तो आपने देखा कि दिस इज नॉट एन आइलैंड, दिस वाज पेनिनसुला. हमें तो इस चीज की जरूरत ही नहीं थी. सो द सॉल्यूशन दैट यू हैव जनरेटेड इज सिंपली डिस्कार्डेड. सो देन द सेकंड थिंग इज स्पीड ऑफ थॉट इज इन आवर जेनेटिक मेकअप. इफ वी जस्ट वांट टू रश विद द सॉल्यूशंस, एक सॉल्यूशन आ गया है एंड देन वी आर मेंटली फिक्स्ड. ये जो फिक्सेशन है, दैट इज एक्चुअली डिसीजन मेकिंग से रिगार्डिंग मेंटल डिजीज है कि हमारे माइंड में ग्रूव बन गया. ग्रूव इज लाइक कि आप, ये ग्रूव है तो इसके अंदर आप
If you throw water here, every time the water will flow through that channel. So mind में भी ऐसा ही है. So what we need to do is we need to find ways how can we ungrew our mind and apply fresh perspective to any problem. So the first problem is that we are not defining the problem. We are stressing too much on the solution. So this is what happens. If the foundation is weak, because the definition of the problem is the foundation. बड़ा शानदार घर आपने अगर बना लिया एक फाउंडेशन के ऊपर, तो दैट हाउस इज नॉट गोइंग टू हाउस यू फॉर लॉन्ग. तो वो थोड़ा सा भी अगर कोई जलजला वलजला आएगा तो दैट इज गोइंग टू बी ग्राउंडेड. What we need to do is we need to create a solid foundation, and the solid foundation does not lie with the solution. The solid foundation lies with the problem definition. This is the second problem. ये मैंने पहले भी बात की. The second problem is we are focused on a specific problem. We are focused here. Now this leaf is only one leaf, and there is a whole ecosystem. There are roots, there is a stem, there are multiple other leaves. Some they are blocking the sunlight and all that stuff. So focus is on specific problem. This is the second problem with the problems. Does not figure out how the solution fits into the bigger picture. The solution ने जो create करना है हमने, how the solution is going to be a larger perspective में उसको कैसा देखा जाएगा. There are problems created by the solutions to the other problems. So the hierarchy of the problem and the solution, they are very critical. We need to understand what new problems are going to be created by solving the present problems. आज आप कोई भी problem solve कर रहे हैं, they are bound to generate new problems. So what we have to do, we have to design systems, structures and organizations in such a way that they solve problem by creating solutions that create problems. Lower order की जो problem है वो create होनी चाहिए. So when we are using the process of ideation, तो इसके ऊपर ये एक metaphor हम use कर सकते हैं कि 1, 2, 3 की जो process है, defining the problem is just like choosing a site. You need to choose a site, then you need to determine the root cause. If you do not determine the root cause of the problem, इसकी usually मैं एक example देता हूँ. Well, this example can be helpful अगर आपने एक मशीन होती है लेथ मशीन. ये जो खराद की जो मशीन है ना, उसको अगर आपने देखा हुआ है तो आपको थोड़ी सी ये प्रॉब्लम जो है, इस एग्जांपल यू कैन रिलेट टू दिस. एक दफा हम एक डायग्नोस्टिक स्टडी कर रहे थे, तो स्टडी में ये आया कि मशीन जो है बार बार जो मशीन है उसका फ्यूज जो है वो जल जाता है. तो वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम कर रहे थे उन्होंने कहा यार ये बड़ा प्रॉब्लम है, जब फ्यूज जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मशीन बंद हो जाती है, और जब मशीन बंद हो जाती है देन वी आर टोटली लॉक्ड. हमें समझ नहीं आती कि अब हम क्या करें. तो हमने एक टूल है, या आप भी इसको यूज कर सकते हैं, 5 why. If you want to get to the root cause of any problem, 5 times you need to ask why. तो फर्स्ट टाइम हमने ये कहा जी कि बताएं जी कि ये फ्यूज जो है ये क्यों जला है. तो उन्होंने कहा जी कि मशीन जो है उस पे लोड ज्यादा था. तो अब एक सवाल है कि मशीन पे लोड ज्यादा है, फिर क्वेश्चन पूछा जी कि क्यों ज्यादा है लोड, व्हाई. उन्होंने कहा जी कि एक अगला सोल्यूशन है जी कि मशीन पे लोड जो है ना इसलिए ज्यादा था कि जो लुब्रिकेटिंग जो पंप है उसके साथ कोई प्रॉब्लम है. अच्छा जी, पंप के साथ क्या प्रॉब्लम है. तो करते करते हो ये रहा था कि वो खराद की जो मशीन थी वो जब वो मेटल को शेप कर रही थी तो जो छोटी छोटी चिप्स वहां से उतर रही थी वो उसके पंप के अंदर चली जा रही थी. अब जब पंप के अंदर जा रही थी तो ये सारी प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट हो रही है. तो हमने कहा जी कि मसला ये है कि आपको उधर एक जाली लगानी चाहिए. एक जाली उधर लगा दें, द प्रॉब्लम इज फिक्स्ड, नो मोर फ्यूजिंग. सो 5 times they ask why. Once you define the problem, you actually choose the site. Then you determine the root cause.
आफ्टर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम डू नॉट रश टू द सोल्यूशन। ये एक मिस्टेक है, ये हम पहले भी देख के आए हैं कि द फर्स्ट प्रॉब्लम विद द प्रॉब्लम्स कि हम सोल्यूशन की तरफ, वी आर वेरी मच सोल्यूशन बायस्ड है, सोल्यूशन को फौरन से हम हैच करना चाहते हैं। वंस यू हैव डिफाइंड द प्रॉब्लम, गो फॉर द रूट कॉज। रूट कॉज इज जस्ट लाइक वंस यू हैव सिलेक्टेड द साइट, अब आपने लेइंग द फुटिंग, जो खुदाई वाला काम जो है वो आपने करना है। एंड then you need to understand the scope कि ये प्रॉब्लम जो है, इट इज जस्ट लाइक पोरिंग द फाउंडेशन, कि प्रॉब्लम का स्कोप क्या है। वो जो हम कह रहे हैं कि प्रॉब्लम की ओवरऑल प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस की जो हायरार्की है उसमें उसका बेसिकली रोल किधर है। ये प्रॉब्लम इफ सॉल्व, व्हाट न्यू प्रॉब्लम्स इट इज गोइंग टू क्रिएट। तो ये बेसिकली 3 स्टेप्स जो हैं इनको हम यूज कर सकते हैं व्हेन वी आर generating ideas who are going to solve the problem. So idea को आप just ऐसे समझें like constructing the building। तो उसके 3 steps हैं, choose a site, choose a site, lay the footings and pour the foundation. So this is defining a problem, determining the root cause of the problem and understanding the scope of the problem. This is what happens। ये जो पहले मैंने एग्जांपल कुछ दे दिए आपको कि how did Google became such a giant company? Now the Google has become a verb, but these guys known as Google guys, they were never looking for a company, they were trying to solve a problem। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि why are search results so bad? This gentleman, he was trying to develop an algorithm that business could use to extract the data to stock retail store shelves। यानी कि वो जो रिटेलिंग के जो इश्यूज जो हैं उनमें, and he was trying to develop an algorithm for vast library database। बजाय इसके कि आप हर शेल्फ पे जाके किताब ढूंढें, तो अगर एक डेटाबेस कंप्यूटर पे बना लें तो वो उससे पता चल जाएगा। यू जस्ट एंटर द नेम ऑफ द बुक एंड द कंप्यूटर विल टेल यू कि ये कहाँ पे बुक पड़ी हुई है। This is what they were trying to do, and through this they actually reached to the pinnacle, जिससे basically Google became a company। So observation is a primary scientific tool। चाहे वो न्यूटन के ऊपर गिरने वाला सेब हो या थ्योरी है एवोल्यूशन की कि जो लोअर हाइट के ज़ेब्रास थे, हाउ डिड दे गॉट इंस्टिंक्ट, उसकी वजह यह है कि वो जो पत्ते खा ही नहीं सकते, तो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये एक ऑब्जर्वेशन है बेसिकली कि देख इफ इट इज अ लॉन्ग जिराफा अगर बड़ा है तो ही कैन एक्चुअली बाय वर्च्यू ऑफ हिज टॉल हाइट ही कैन रीच टू द लीव्स एंड ही कैन ईट दोज। बेसिकली स्पीशीज स्मॉलर थी, दे गॉट एक्सटिंक्ट क्योंकि उनकी फूड तक जो है वो एक्सेस जो है वो नहीं थी। तो आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम। तो इस पे पहले बात हो चुकी है कि इट्स अ मैट्रिक्स। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की एक हायरार्की है। व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, नेवर अंडरस्टैंड दैट दिस प्रॉब्लम इज एन आइसोलेटेड प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम कैन बी क्रिएटेड if there is no other solution। Who has created that problem? How did that problem got created? ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो हमने सॉल्यूशन फेज से पहले, डिसीजन मेकिंग से पहले, ये सारे काम जो हैं ये होने चाहिए कि हायर लेवल प्रॉब्लम और लोअर लेवल प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्लेस ऑफ दैट प्रॉब्लम इन द एंटायर मैट्रिक्स। वो जो लास्ट पीस जो है जिसने उसमें अंदर जाके फिट होना है, what is the relationship, then you can group the problem to determine what is missing। when you find what is missing, you actually determine the scope of the problem। and यहाँ पे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अगेन कि अभी if you use car, अगर imported car अगर आप यूज करते हैं तो there are a few cars जिसमें you don't need actually the ignition key। आपको वो कार की चाबी बेसिकली नहीं चाहिए। This problem was first time highlighted in the last century at Ford company। Ford is a big car manufacturer in the US। तो Ford को time and again जो customers जो हैं they were complaining कि जी जो कार की चाबियां हैं
it takes around $200 to replace the key. अगर आपकी चाबी गुम गई है तो $200 लगेंगे to get the duplicate key. Now they were looking for कि there should be a way out. किसी तरह से ये चाबी जो है इसका मसला हल किया जाए. Customers they were not very happy. तो उन्होंने एक किसी brainstorming session या group जो स्टडी जो है फोकस ग्रुप स्टडी कराई. तो मल्टीपल लोग जो हैं they sat together. Now they were brainstorming यार कोई क्या सोल्यूशन होना चाहिए. तो बड़े सोल्यूशन उन्होंने जनरेट किए. एक सोल्यूशन ये था कि the key should be as big as this. चाबी इतनी बड़ी बना दें कि वो घूमे ही ना. एक और सोल्यूशन यह था कि चाबी के साथ आप फ्लैशिंग लाइट लगा दें. There was another solution कि आप उस चाबी को ढूंढने के लिए एक और चाबी बनाएं जो हमेशा अपने पास रखें, and that is going to help you to find that keys. And then somebody pointed out यार थोड़ा सा वेट कीजिए और देखें कि what problems the key solves. चाबी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है. A pair of key या जो चाबी जो है that solves two problems. आप उससे डोर को ओपन करते हैं and you get into the car and then you put it into the वो जो हैंडल के नीचे इग्निशन स्विच है उसके अंदर लगाते हैं जिससे कार जो है वो स्टार्ट हो जाती है. By that time ये जो पुश स्टार्ट इंजन जो है ये इग्निशन भी आ चुका था. तो उन्होंने कहा कि आप दो सॉल्यूशन दो डिफरेंट जगह पे एग्जिस्ट करते हैं. ये कॉम्बिनेशन लॉक ये 19th सेंचुरी का सॉल्यूशन है कि आपको पता ना कि वो जो सूट केसेस के ऊपर डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं कि आपने वो कॉम्बिनेशन जो है वो करना है, फिर आप उसको प्रेस करेंगे तो लॉक ओपन हो जाएगा. और दूसरा ये सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है. उन्होंने कहा कि अगर हम जो डोर हैंडल है डोर हैंडल के ऊपर इफ वी कैन पुट अप दिस कॉम्बिनेशन लॉक तो ओनली कार ओनर नोज द कॉम्बिनेशन लॉक. ही कैन यूज द कॉम्बिनेशन लॉक टू गेट इन और आगे आप जहां चाबी जाके अंदर इंसर्ट करते हैं वहां पे ये पुश स्टार्ट लगा दें. सिर्फ एक बटन इसको आपने प्रेस करना है तो कार स्टार्ट हो जाए. नाउ वेयर इज द की. नाउ losing the key was a problem, but when they tried to define the scope of the problem कि basically ये वाला जो problem है ये आ कहां से रहा है, it was a solution, key was a solution and losing the key was a problem. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको eliminate कर दिया, की को eliminate कर दिया by combining two existing but different solutions. लॉक को बाहर लगा दिया, इसने चाबी का एक फंक्शन पूरा किया एंड देन वो जो अंदर जहां पे हम चाबी कार में इंसर्ट करते हैं वहां पे कार्स के अंदर अब वो जो इंजन स्टार्ट स्टॉप का जो है वो आ चुका है. यू सिंपली गो एंड प्रेस दैट. सो दिस इज हाउ वी कैन जनरेट sustainable solution or we can solve the problems in a sustainable way. So when we choose the problems, choosing and solving the problem, we need to understand यही जो इनका scope जो है, what keeps planets moving, flying off, and how do they move in the planetary orbits. ये एक problem है. अब solution जो ये इसी तरह से जो जब प्रॉब्लम देखा गया तो वी सॉ कि जो ग्रेविटेशन जो है ये भी आ गई. हाउ डू द फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स बिहेव ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट. सो न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एंड देन वी हैड द केपलर्स, इनके जो कानून हैं जो फल्कियात के ऊपर, दे ऑल गॉट इन्वेंटेड. सो व्हाट दे डिड, दे एक्चुअली सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स. सो मेनी अ टाइम वन प्रॉब्लम solve one solution solve multiple problems. जैसे आइंस्टाइन जो था उसने through his theories he solved the problems जो कि मैक्सवेल की जो थ्योरीज थी फिजिक्स के ऊपर उनमें भी थे और न्यूटन में भी थे. मैक्सवेल tried to solve the Newton's problem and Einstein he solved both problems. They were associated, one equation, two problems solved. So single solution to explain gravity and electromagnetism. Solve the problems of both Newton and Maxwell. He solved 4 problems with one solution. So ये वो जो पहले जब हम बात कर रहे थे कि की जरूरत नहीं है. Key was a solution to the problem. What we have done? We have eliminated the problem.
When we have eliminated the problem, we don't need a solution. The problem is automatically solved. So the second step is so when we are borrowing, first you copy, then you create. इस चीज में हमें देखने की जरूरत ये है कि when we are solving, when we are borrowing, related borrowing होनी चाहिए. What problems we are trying to solve? Are we in the stone age, bronze age, or we are in the iron age? तो लिहाजा जो टूल हमने सेलेक्ट करने हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम वो basically related tools होने चाहिए. Or in the or the sword that will not be available. So what we have to go for while we are borrowing, we need to go for the right tool. What we have to do, we need to seek where to borrow. The source of theft determines the degree of creativity. Sometimes what we do when we borrow from the very much field जिसमें हम काम कर रहे हैं, आप हिस्ट्री में काम कर रहे हैं, हिस्ट्री की ही एक और ऑथर हैं, उन्हीं की टेक्स्ट अगर हम उठा लें और अपने नाम से अगर छाप लें तो दैट इज कॉल्ड अनएथिकल एंड प्लेजराइज्ड. लेकिन जो मैंने शुरू में एग्जांपल दी कि जब एप्पल ने बिजनेस मॉडल कॉपी किया, किसका? जिलेट का. So they copied. कोई भी नहीं कहता कि that is actually not a creativity. they कहते वो तो highest degree of creativity है कि Gillette और music they have nothing to do with. So they got inspired from that particular business model and they applied that business model on business. What matters where you go from. अगर if from the same domain you are a thief. If domain and if you that is an example of diff or iPod, there is no connection, but the business model is the same. When Apple was building this product, उनके सामने सोनी का वॉकमैन था. They were trying to copy the product but not the business model. The search of material, if you borrow from within your domain, you actually study your subject and your competition only. Then you need to step away and you study the similar subjects which are related to your own subject. You can travel, and then there are people who borrow from different domain, a geologist or a businessman पर्सनल. सो ये जो बोरोइंग का कॉन्सेप्ट है, इस इधर से डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी आएगी. ये जो ओरिजिनलिटी जो है इसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर मिसलीडिंग आवरसेल्व्स एंड सो ओरिजिनलिटी और ये creativity hand in hand. And if you are using this, if you are borrowing from a different domain, your solutions are original solution. So something like this. So if you are trying to create solutions, you can try any one of these. Do the opposite of market leader. Whatever your competition is doing, borrow from the similar places or borrow from the distant places. All right. We are going to see. Then comes your decision making वाला जो हमारा part है. That part, before we go into the decision making, मेरा एक छोटा सा question है basically, and I want one of the colleague, one से two responses, not beyond 30 seconds. Decision making. Why should we decide? Why to decide? ये decision making की जरूरत क्यों है? One or two responses. If you can simply unmute your mic, क्योंकि अभी आपको ये ऑथराइज किया हुआ है, तो you need to speak about 30 seconds कि ये decision करने की जरूरत क्यों है? Why do we have to study the decision making? Why we decide in first place?
All right. एक टेक्स्ट है उसमें किसी ने लिखा है कि टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. यस, बिल्कुल करेक्ट है. जो डिसीजन मेकिंग है इस इसका एक जो रीजन है कनेक्टेड है कि व्हेन यू आर मिलियंस यू आर सॉल्विंग. आप डिपार्टमेंट है या क्लास टीचर हैं या आप अपने घर में हैं, you are a father, you are mother, you are sibling, you are your daughter. Whenever you are trying to make a decision, it is an effort to solve a centered decision making है. ये आती कहाँ से? इसको करने की क्यों जरूरत है? उसके लिए ना ये very deep into we need to understand कि स्ट्रक्चर क्या है, ये जो है किस तरह काम करता है, या ब्रेन जो है इसका क्या पावर है. is a great gift from God. What it does it require? It requires a small amount of oxygen and glucose. 28 billions neurons, billions of rather trillions of connections between different जो इसके कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं. जो इंट्रिकेसी है, हाउ इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ब्रेन इज, इसकी जो प्रोसेसिंग पावर है दैट इज 30 बिलियन बिट्स पर सेकेंड. दिस इज ये जो अगर हम सारे के सारे जो हमारे पास न्यूरॉन्स हैं इन या जो वायर्स हैं इसको खोल के जोड़ें तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 6000 माइल्स ऑफ केबलिंग एंड वायरिंग एंड 100,000 माइल्स ऑफ नर्व फाइबर. दिस इज व्हाट इज एनकैप्सुलेटेड इन दिस जो हमारा स्कल्प है. तो what we need to see is we need to see what does it have to take with the decision making. When you are in a position that you are going to take decisions, you need to understand that humans are not machines. They are a different species. So every time humans they have experience, they register that experience, then another experience, then another experience. Now it was a clean slate when the child was born. Then the child was observing the environment, the touches, the mother, the father, if there were some old siblings. अब क्या हो रहा है, उसकी clean slate के ऊपर एक script लिखा जा रहा है. Beyond the age of 8 to 10 years, he is just reading those scripts. We are all actors. So when you are taking decisions, you need to take this into account. इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. When you are taking a decision, some people they are going to be the beneficiary of your decision. क्योंकि जब फैसला होगा, the action will flow from the decision. People will be beneficiary. People will be victimized. They or at least they will feel that they are being victimized. So some people they will be victims. Some they will be the beneficiaries. आप इसको understand करें कि imagine you have this surface and on this surface you have कोई heating source है, इसका temperature है 150 डिग्री C. 150 डिग्री C की जो surface है उसके ऊपर आप water pour करें और थोड़ी देर बाद आए और पानी को तलाश करें. You will not find any water. The reason कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सी, तो वो सारे का सारा जो वाटर है वो स्टीम बन के एवेपोरेट हो जाएगा. अब इसी सरफेस को आप -10 डिग्री सी पे रखें एंड पुट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर अगेन एंड देन कम बैक इन हाफ एन आवर, मे बी इन centuries time you come back, as long as the temperature is maintained below zero, the water will exist over there. अब अगर आप इन दोनों सिचुएशंस को इक्वली ट्रीट करें और कहें जी कि दोनों केस में पानी पड़ा होना चाहिए, दैट विल नॉट हैपन. दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. We as makers, we actually do not practice this. We treat all surfaces equal. We do not consider the human considerations, human limitations, or the power of prior experience that humans have. We need to think on that. So
क्वेश्चन ये है फिर किया क्या जाए, किया क्या जाए, दिस इज द पावर फार्मूला, इस फार्मूले को अप्लाई किया जाए। डिसाइड व्हाट यू वांट, टेक एक्शन, notice what's not working, change until you achieve what you want. This is the problem. The problem is we do this, we decide what we want and we take action, and our loop is simply circling between the step 1 and step 2. How we are going to improve our decision the next time we have a similar situation, it is only through the process of feedback. How will you notice that someone is not working? Some of your friend, a system, they are going to tell you that ये जो 4 action items आपने describe की हैं, 2 of them they fired and 2 of them they backfired. इनको आप खत्म कर दें, 2 नहीं ले आए. So keep working in an evolutionary way until you find the optimum combination. So change until you want. तो एक और इधर क्वेश्चन ये है कि sometimes जब हम लोगों से पूछते हैं कि जी आप फैसले में इतनी देर क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे डर है कि कोई गलत फैसला ना हो जाए, ये इसलिए आई एम स्लाइटली इनडिसाइसिव. ये जो इनडिसीजन जो है ये इटसेल्फ एक डिसीजन है. दैट इज ए डिसीजन दैट यू डिसाइड नॉट टू डिसाइड. सो अब ये है कि सक्सेस जो है उसका अगर हम रूट तलाश करने की कोशिश करें, what how the success is routed. Success is a function of good judgment. Good judgment is a function of experience and experience function of bad. So keep deciding. फैसले करें आप, लेकिन इस तरह से फैसले ना करें एक वो जो मॉर्बिड सी कैफियत जो है वो क्रिएट हो जाए, where you are not listening to anyone, where you have taken a decision and then आप चाहते हैं कि अब तो मैं दीवार ही तोड़ूंगा, I'm not willing to reconsider. अगर थोड़ा सा पीछे होकर देखें शायद साइड पे एक दरवाजा अवेलेबल है, there is a way out. तो ये जो 4 steps हैं, this is what can actually take us far beyond where we otherwise we cannot actually go. The decision जो है usually in organizations, when we take decisions we control our destiny as well as the destiny of our fellows. You are principal, you are vice principal, you are head of the organization, vice chancellor हैं आप, teacher हैं for example आप, you are taking decisions. A decision to get prepared and go into the class, a decision to change the teaching learning process, a decision to improve the teaching learning process, a decision to integrate the existing teaching learning process with the contemporary जो market based skills हैं उनके साथ. What we are doing, we are actually playing with the destiny of ourselves or the students we are dealing with. ये जो decision जो है इसका अगर वो इसकी etymology देखें आप तो a decision, D is from, that is a Latin word, and this is from cadere, to cut, means to decide. Decisions are different from stating preferences. It's not only कि अगर आप ये कहें कि this is what I want, well that is a preference. If you have convert that preference into a decision, you need to avoid this Niagara syndrome. What is Niagara syndrome? Niagara is from Niagara Fall. कि आप अगर आबशार के पास चले जाएं और उसके ऊपर अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख दें तो वो वाटरफॉल के साथ ही ट्रेवल करेगा. ऑटोमेटिकली वो जो ऑब्जेक्ट है वो खुद से किसी और डायरेक्शन में नहीं जा सकता. दैट ऑब्जेक्ट लाइक खुश्क पत्ते की तरह, that does not have any choice. So that is what a preference is. If you have to convert your preference into a decision, that is what you need to see. You need to know what to focus on. You need to know what things mean to you, and you need to know what to do to create the results. This is going to help you to convert your stated preferences into very crystal clear decision. इस काम के लिए जो एक चीज बहुत ज्यादा हेल्प साबित हो सकती है, that is this principle of the objective. इसको ना मेरा ख्याल है कि
this is first thing first. We need to understand and balance the ends, ways and means. जब भी कोई फैसला करना है हमने, that is actually to achieve something. If you want to achieve that, there should be a path. And if there is a path, then you need the means, you need a car. For example, you decide you want to go from Lahore to Multan. That is the end. Multan is the destination where you want to be. And then there is a way. You can go by train, you can go by air, you can go by bus, you can take your own car, you can walk, you can bicycle, you can cycle it, you can walk. And these are actually the means. So what we need to see is, in order to have an optimum result of our decision, we need to balance the ends, ways and means. So the question is, what is an end? End is what is to be achieved and why. What are the ways? Ways are the how it should be achieved. And means are the resources that are needed to achieve it. Many a time people are confused between ways and means. तो आप ये देख लें कि जो way जो है ये रोड है की ऑप्शन है, ट्रेन की ऑप्शन है, एयर की ऑप्शन है या वॉक. मीन्स जो है these are the resources. Once we have determined that how we are going to get there, अगला क्वेश्चन ये है कि आर वी रिसोर्सफुल इनफ. हमने एक नई बिल्डिंग बनानी है और बिल्डिंग हमने बनानी है व्हाई, बिकॉज वी वांट टू एक्सपेंड द कॉलेज बिल्डिंग. अब व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन ओवर देयर, ये बिल्डिंग बनेगी 4th फ्लोर. अब 4th फ्लोर एक बिल्डिंग है. नाउ डू वी हैव द मनी? इफ यू डोंट हैव द मनी, इट मींस दैट डिस्पाइट द फैक्ट यू हैव एंड्स एंड वेज, विदाउट मींस you cannot proceed. So ends, ways and means, they provide a framework to generate a nested hierarchy of the subordinate goals. अब जब आपने strategic level के ऊपर एक decision ले लिया, तो जो जितने भी subordinate goals हैं, एक main goal है, goal ये है कि we want to go to Multan, and then उसको आप sub items बना लें कि we need a car, we need a motorcycle or a bicycle, car rent करनी है. So these are all objectives. They will be aligned with the principal objective where we have defined the destination to go. So ends are what's and why's. You should be very clear okay, what you want to achieve and why. And ways are the hows. Okay, how you are, what is your approach? What is your methodology? How you are going to attempt to be at the ends that you have defined. And then means, these are the resources, what and whom, who is going to do what to get there using ways. So using ways, if you want to be at the ends, you need means. In ends, objectives to be achieved. What and why of the strategy, they are expressed in the end state. उसको बताएंगे जी कि end goal क्या है, ये बिल्डिंग बननी है, ये एक नया प्रोग्राम हम बेसिकली लॉन्च करना चाहते हैं, एक्सपेंशन है एग्जिस्टिंग प्रोग्राम की, उसका स्कोप चेंज करना चाहते हैं, नई बिल्डिंग जो है वो बनाना चाहते हैं. एंड देन वेज, स्ट्रेटजी और अ प्लान दैट एम्स टू अचीव द एंड स्टेट. दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंड स्टेट. दिस इज द स्ट्रेटजी दैट हाउ वी प्लान टू अचीव द एंड स्टेट. And these are the resources that we are going to implement in order to achieve the end state. It means they answer the question with what and with whom shall we carry out the plan of action. This is how we do it. And then ये जो balancing की बात हो रही है कि ends, ways and means, they are to be balanced. For example, if you have the means and the ends but no ways, you are just like a rudderless ship, incoherent plan of action or strategy. क्यों? resources भी हैं, end goal भी है, but path is not clear. You have a car, you know you want to get to Multan from Lahore, but you are not sure कि कार चलेगी कहाँ, कहीं कार ने ट्रेन की पटरी पे चलना है या पानी के अंदर चलना है. So incoherent plan of action.
Then in another situation, you have the end state, you have the ways, you have the path, you have the end destination, but you don't have the means. ट्रेन का ट्रैक भी है, आखिर में आपने जाना है कराची, but at the end there is no train. Means are missing. That is an unrealistic or insufficient resources. कि आपने ऐसी strategy बना ली है कि without looking into the existing resources of your organization, you brought up a plan that requires those resources which are not available or made ready available. This is what we call unrealistic है ये काम. Are not. Or in another way, there is no end defined. Means भी है, ways भी हैं. We are train की पटरी भी है, train भी है, लेकिन ये नहीं पता जाना किधर है. तो you are on the train. इससे कोई ट्रेन आ गई उसमें बैठ जाएं तो आप इस्लामाबाद पहुंच जाएं, वहां से कोई और ट्रेन लें. So we are the optimization of the decision making. It involves coherent relationship between the ends, ways, and means. Coherence, goals, actions, and resources, they are supposed to be in equilibrium. So उन्हें एक equilibrium में होना है. So that is at the interface of 1, 2, and 3. So state 4 is what we are looking for when we are in the process of making a decision. अभी आप देखिए जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी आप काम कर रहे हैं, तो if you are taking decisions or the college management is taking decisions and those decisions are not working, they are either it's very unlikely that they should be at state 3, but either state 1, 2, and 3. If you are at state 4, the chances of failure of a decision, they are very minimal, because this is where we have created that required equilibrium between the ends and the means and the ways. When we apply these ends, ways, and means, these are some of the questions that we need to ask. What is your ultimate vision and objective? Because decision making जो है, without looking at the past data and without looking into the future, so without considering the future outlook, that why you are doing it, what are the long-term objectives of the organization in which this particular piece of decision is going to fit in. If you don't look into that, you cannot make a sustainable decision. What should be the best way to achieve this vision or goal? Do you have the means to achieve this objective in a manner you have defined? अगर आपने एक डिसीजन लेना है और एक ऑब्जेक्टिव आपने डिफाइन कर दिया है, now you need to see what resources are required. Do you have those resources? And do you need to change the ways you intend to achieve your objective? If so, would this lead to the attainment of goal? ये भी क्वेश्चन है कि क्या एक ही सोल्यूशन है हर प्रॉब्लम का? नो, एक पूरा टूल है जिसे हम अल्टरनेटिव एनालिसिस का नाम देते हैं. देयर आर मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग. देयर आर मल्टी, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज ए पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट, एक गवर्नमेंट जो है उसने एक सड़क बनानी है, या ये जो सबवेज हैं ये बनने हैं, अंडरपासेस हैं, या ये जो ट्रेन्स बन रही हैं विद इन सिटीज, गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू मेक मनी आउट ऑफ दैम. लेकिन अगर यही काम एक सोसाइटी बनानी है, फॉर एग्जांपल किसी प्राइवेट एंटिटी ने, तो देयर क्राइटेरिया इज टू मेक मनी आउट ऑफ इट. तो गवर्नमेंट का क्या है? गवर्नमेंट का है पब्लिक यूटिलिटी. इफ पीपल आर बीइंग फैसिलिटेटेड, that is the criteria that should be used when a public office holder is making a decision. लेकिन if the same decision is being made in the private sector, क्या कोई residential कोई block बन रहा है, कोई plaza बन रहा है, कोई commercial building बन रही है, तो उसमें what they are going to consider, उनका criteria शायद public utility नहीं है. Yes, they are trying to add something into the public service, but they are trying to earn some money at the end of the day. Do you need to break up your vision into sub goals and sequence them over time? ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या एक लॉन्ग जो डेस्टिनेशन है, कराची जाना है जी हमने,
तो कराची जाने से पहले अगर एक दिन में नहीं जा सकते तो एक दो बीच में स्टॉप रख सकते हैं। तो विजन को फ्रैगमेंट करके सब गोल्स एंड देन उसकी वर्टिकल इंटीग्रेशन कर लें, दैट व्हाट यू आर रेडी टू कंसीडर और नॉट। अब जब डिसीजन हम कर रहे हैं तो व्हाट वी यूजुअली गो थ्रू, ये शुरू में मैंने पहली स्लाइड पर बात की, फ्रिक्शन, uncertainty, lack of knowledge. These are the three things that we should try to consider when we are making a decision. Friction is wear and tear, the wasted heat and energy. एक basically वो जो emotional sabotage है, जो हमारी already existing feelings हैं, because we are humans. We come from different family background, different cultures, and we have different values. We have been brought up in different ways. It is very unfortunate to actually expect from people that they behave like robots. That may not happen. If they're not robots, ये friction होगी. Now the skill of the leadership and the management or the decision maker is कि decision ऐसा होना चाहिए इस friction को minimal रखा जाए। ये जो है कि favoring one and fixing other, this is something that will only bring disaster and harm into our organizations. We should avoid that. Then uncertainty, इस पे पहले बात हुई कि uncertainty जो है we are not very sure कि what is going to happen tomorrow, एक best guess है। तो जब आप डिसीजन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू प्लान्ड द स्प्रिंग 2020 semester, you planned the semester to start in January and end in May or June, but that semester ended in September because nobody knew that this corona thing is going to be coming in March and there will be lockdown and then the whole teaching learning process is going to be halted. So when we are making decisions, there are two types of unknowns. एक को हम कहते हैं noun unknowns, हमें पता है कि कुछ चीजें फ्लक्चुएट करेंगी बट वी आर नॉट श्योर हाउ मच फ्लक्चुएशन। ये जो हाउ मच फ्लक्चुएशन जो है दैट इज समथिंग कैन बी मैनेज्ड। दूसरे टाइप ऑफ जो अननाउन्स हैं उन्हें कहते हैं वो अननाउन अननाउन्स हैं। लेट मी राइट दैट डाउन। सो नाउन unknowns or unknown unknowns. So this corona related जो pandemic है, this was an unknown unknown. So that is why everything got disrupted. So if you are planning an activity and there is a war, for example, nobody could predict war apart from those guys who are really sitting at the top and taking some strategic decisions. So people like us, so we have no clue if there is a war going to occur in next 6 months. So लिहाजा जो planning हम कर रहे हैं, in that plan ये जो noun unknowns जो हैं इनको basically we have to take care. And then is the lack of knowledge. Lack of knowledge is the condition of ignorance, not knowing something that is knowable and certain. ये जो uncertainty है इसको basically remove नहीं किया जा सकता क्योंकि it will not be worth it to work so much. क्योंकि आपको today if you are fixing something in your organization that involves कि जी state bank जो है वो minimum interest rate क्या होगा on January 1 we don't know, but we can predict जो past data है उसकी base के ऊपर कुछ एक guess किया जा सकता है। well this could be क्या lower करेंगे या higher करेंगे, अगर हो higher या lower करेंगे interest rate को तो कितना कर सकते हैं। so uncertainty shall be existing, friction shall be existing, लेकिन ये जो lack of knowledge है इसका हल है। फॉर एग्जाम्पल lack of knowledge ये है कि when we open the doors we are used to कि door का एक handle होगा, लकड़ी का दरवाजा होगा और we need to go and wait and then pull the handle and then get into the room. अभी फिर आप जाते हैं तो शीशे का दरवाजा है, there is no handle and that actually involves कि आप जाके थोड़ा सा stop करें, वो आपको सेंस करेगा और सेंसर फिर दरवाजा खुद ओपन कर देगा। तो इसमें क्या है, इसमें लैक ऑफ नॉलेज है। इफ यू आर नॉट एक्सपोज के डोर कैन ऑटोमेटिकली ओपन
तो इसके ऊपर ट्रेन किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन ऐड की जा सकती है। व्हेन वी ऐड द इंफॉर्मेशन, ये जो लैक ऑफ नॉलेज है इसको बहुत हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है। लैक ऑफ नॉलेज शुड बी रिकवर्ड एंड द अनसर्टेनिटी एंड फ्रिक्शन दे मस्ट बी मिनिमाइज्ड। लेकिन ये काम कैसे होगा? इस काम के लिए ना ये 4 स्ट्रेटजीज हैं हम कर सकते हैं। व्हेन वी आर dealing with these frictions and uncertainty, we need to develop a leaps of faith, assumption होने चाहिए हमारे पास। What will the assumptions do? The assumptions, they will provide a framework to advance the planning in the absence of uncertainty and knowledge। कि ये बेसिकली जो अनसर्टेनिटी है उसके अगेंस्ट एक assumption है कि well this could be something, लिहाजा इस assumption के बेस के ऊपर प्लानिंग हो सकती है। हम कहेंगे कि इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज गोइंग टू बी से 0.5%, एक नंबर आ गया है, नाउ द प्लानिंग कैन बी एडवांस। देन सिनेरियोस, द डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स एंड सिचुएशंस दैट आर डिजाइन्ड टू रिफ्लेक्ट द एक्सट्रीम्स टू हेल्प द डिसीजन मेकर्स प्रिपेयर फॉर द एक्सट्रीम। सिनेरियो है, हम सिनेरियो बिल्डिंग कर लेते हैं। एक वर्ड है कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। इन वर्स्ट केस सिनेरियो, well, for example, अभी next week से we are going to start the semester again। 2 हफ्ते पहले जो प्लानिंग हुई उस प्लानिंग में ये था कि the universities may open full time, and then जो NCOC का जो recent decision है, another lockdown has been imposed and the colleges and the universities, they are closed again। So it means we need to build scenarios कि what is the worst outcome that we should expect, उसके against or what are the best possible outcomes। So we need to be, as a decision makers, we need to be very quick enough to build these scenarios। We need to create options। Many a time we find our colleagues saying bhai ye ek hi option hai, no, this is not possible। At any given point of time when we are making decisions, there are more than one options। It's the explorative mind that is required। And then the last bit is simplicity। From the execution point of view, if you are taking decisions, please keep your decisions so simple that everyone can understand। If they are better understood, they will be better implemented। So इसको बिल्कुल मैं इसके एग्जांपल ऐसे दूंगा कि इन ये जो वॉर थिएटर में जो प्लानिंग हो रही है वो तो जनरल हेडक्वार्टर्स में होती है। जो सोल्जर को जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही सिंपल है। He has got those instructions that when he should shoot and when he is not supposed to shoot। So what we need to do is when we are making plans and processes, क्योंकि आप डिसीजन मेकर्स हैं, आपने ये चीजें करनी हैं, तो you need to keep the plans and processes so simple that everyone in the organization can understand। अगर वो jargon है उसमें complex चीजें हैं, people can't understand what you mean। If they can't understand what you mean, how would they understand what you want? If they don't understand what you want, how would they act so that you can get what you want? So we have to keep it as simple as possible। अब question ये है, if we are in a position of disadvantage, how can we turn this disadvantage into an advantage while we are taking decisions? So both failure and success, they teach a lot of lessons। And so what we have to do, if we are keeping that feedback loop very much active, we need to learn where have we failed recently, what does that teach us, how can we extract value from that experience। Similar questions should be asked if we succeed in our goals and you are going to restart another project of similar nature। So what have been our recent successes, what caused them, what are the causes, or were they the result of design or a plain luck। अगर वो डिजाइन नहीं था या सक्सेस जो लक है, क्या उसको हमने एक्सप्लॉइट किया है। फॉर एग्जांपल इफ your college or university is in such a area where there is a new industry that is going, or industrial zone that is going to be set up, so that is actually an advantage। that is an arbitrary advantage। तो जो आप आगे फर्दर अपने प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, उनकी एक्सपेंशन है, उनकी रीओरिएंटेशन है, आर यू गोइंग टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द न्यू स्टेक होल्डर्स that have emerged in your vicinity।
So can you exploit it now? अगर पहले नहीं किया, ये सारे questions जो हैं, they can help us turn the disadvantages into advantages. When you are in a position of decision making, you are working within this triangulation: responsibility, authority, and accountability. Now I feel I leave it for you to fill this. If, for example, if you have no authority, you have been given responsibility and you are being held accountable, what you are going to do? It will be a chaos, because you did not have the authority to make decisions and get them implemented. But you are held responsible, and you are being held accountable. Many a time this actually, unfortunately, it's not only in our country, in many developing cultures, developing nations, this is a problem. Where the centralized authorities, they don't delegate. Yes, responsibility is there, accountability very much on the people who are being held responsible and are being held accountable. They have no authority to get things done. So problem. So, similarly, if you are not being held accountable, there is the frugality is going to be the ultimate result. आप basically गलत फैसले करेंगे. Responsibility भी है, authority भी है, लेकिन accountability कोई नहीं है. No KPIs, कोई check and balance नहीं है अगर, तो that is another trouble. There has got to be accountability, and then another combination could be authority भी है, accountability भी है, responsibility कोई नहीं है. That is a total wastage of resources, where you have not defined any attainable action items. So nothing was there which you are supposed to be held responsible. If you are not supposed to be held responsible for something, where you are going to be held accountable. This is another thing. When you are actually making decisions, decision making is a habit. Now this habit sits at the crossroad of knowledge, authority, and skill. What to, why to. The ways means है, उससे मिलती जुलती चीज है. So what we have to do, you need an authority that you want to get something executed. You have the knowledge of what you want to do and why you want to do it, and you have the skill how you want to do it. At the intersection of these three is this habit. This is what we are looking for, that you should be able to achieve as a decision maker. So if you have no authority, it means there is no desire to take a decision. Despite the fact that you have knowledge and skill, you would have a very boring situation where you don't want to do anything, and then you want to do, and you know what you want to do, but you don't know how to do it. So nothing will be executed. Or if you have got the skill, you can implement things, and you have the authority, you want to implement things, but you don't have the knowledge. For example, you are a construction manager. आपने construction management में आपकी degree है. You have the knowledge of construction. लेकिन आप करना क्या चाहते हैं? आप software development का काम करना चाहते हैं. Now you have the team building skills and all that stuff, but the knowledge of that field or that project, you don't have it. So this is again a situation that is highly unwanted. So there has to be a balance between knowledge, skill, and authority in order to inculcate that habit. This is the last slide. Perhaps there are a few more slides, but I'm already running over the timeline. Substance and style. If you are taking a decision as a leader, you need to actually map yourself कि आप किस place में हैं. So you need to think कि substance क्या है? Professional competence, the ability to get things done, the ability to plan, to organize, and to achieve the goal. ये सारे के सारे जो है, ये किसके फीचर है? And the content of leadership, ये सारा substance है. What is style? और या हम कह सकते हैं the task orientation. Style क्या है? The way in which a leader leads, the interpersonal component of leadership. You can be a technician, you know the process very well, but you are a failure when it comes to inspire and communicate. People orientation. So substance,
is task orientation, style is people orientation. तो इसमें देखते हैं जी कि हम सब कहाँ पे लाई करते हैं कि इन दिस पर्टिकुलर जो स्टाइल वर्सेस सब्सटेंस जो हमारा मैप है, इफ यू आर एन इंस्पायरिंग लीडर, you are competent, you have the ability to get things done, you can plan and organize them, you have the task orientation as well as the people orientation, so you are an inspiring leader. If you are not inspiring leader, you can still be an effective leader. You have the ability to plan things, you can get things done, but you are not that sort of engaging that an inspiring leader is. So you are mostly task oriented hain aap. If you are task oriented, you understand the job, you get things done, but you are not people oriented, you are not cherished by the people you lead. तो effective leader हैं. The third thing जो है that is a posturing leader. Posturing leader, and the last item is the ineffective leader. If you are a posturing leader, इस केस में क्या है कि everyone has limitations. Limitations में ये है कि now you are एक आपका potential है, you have fully exploited your leadership potential, लेकिन जो existing job है that requires beyond whatever your potential is. Now you will be a posturing leader. When you are posturing leader, this is the most problematic type of leading style. इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक पीटर प्रिंसिपल है, ये जो भी मैंने डिस्क्राइब किया है ना, कि पीटर प्रिंसिपल ये है कि यू हैव आप ऑलरेडी छत को लग चुके हैं, आपने अपना सारा जो पोटेंशियल है उसको एग्जॉस्ट कर लिया है. द करंट जो जॉब है दैट रिक्वायर्स मोर देन दैट. तो अब आप यू फॉल विक्टिम टू द पीटर प्रिंसिपल. यू विल ट्राई टू सराउंड योरसेल्फ विद यस मैन एंड फेवरेट्स. यू विल इंसुलेट योरसेल्फ विद पर्सनल एडमायरेशन. आप सिर्फ उन लोगों को अपने नजदीक आने देंगे जो सिर्फ आपको वो बताएंगे जो आप सुनना चाहते हैं, ना आपके वो बताएं जो आपको सुनना चाहिए. तो दैट इज अ वेरी डेंजरस लीडरशिप स्टाइल, पोस्टिंग लीडर कहते हैं. देन द इनफेक्टिव लीडर, इस टाइप के जो लोग हैं दे आर नॉट रियल लीडर्स. दे लैक बोथ द सब्सटेंस एंड स्टाइल. दे हैवीली रिलाई ऑन पनिशमेंट्स and reward. They tend to turn into the posting leader when they see they are ineffective. So ये basically when we are taking decisions, or we are in the position, or we are being the decision makers, we need to try to at least stay on top of this line. So this brings this first session to an end. I've almost gone 6 minutes beyond that. If you have any questions, 1 or 2 questions I can take, because there is another session on time management. If there are some intriguing questions on the content that I have presented, तो हम उसको वहाँ पर भी ले सकते हैं. तो अभी आपकी 10 मिनट की ब्रेक होगी, and then there will be the session number 2. Thank you so very much.